How are you all? I hope you all are fine. Students, in this video we are going to discuss about chapter number 2 of 9th class ICSE chemistry, Selena book, right? And in this video we are going to start topic number 2.3. We have already done till 2A, right? And now next topic is types of chemical changes or types of chemical reaction. Basically there are 4 types of chemical changes: direct combination, decomposition, displacement and double decomposition. So in this video we will discuss only about direct combination. Students, as its name suggests, combination, we can simply understand what is combination: when two or more substances combine together to form a single substance. So direct combination, two or more substances combine together to form a single substance. For example, we can simply say if A and B are two substances, A plus B, they are simply combining and making a compound or a substance AB. एक single substance बन रहा है from the combination of two or more substances, right? Examples क्या है इसके? In combination reaction, two elements combine to form a compound. इसके different मतलब kinds हैं. फर्स्ट में क्या है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. जब दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंथेसिस. वी सिंपली कॉल इट सिंथेसिस. तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है. वी ऑलरेडी नो दैट. एंड इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. जब कंप्लीट कंबशन होती है कार्बन की तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और वी कैन सिंपली से कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कार्बन एंड ऑक्सीजन सिंपली कंबाइन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट इज रिलीज्ड. Next example is magnesium reaction with oxygen. We know कि when magnesium ribbon or simply magnesium reacts with oxygen or burn in the presence of oxygen, what we will get? We will get magnesium oxide. On balancing this reaction, what we will get? We have to write 2 here and 2 on this side. Magnesium combined with oxygen to form magnesium oxide. Clear? In second type of reaction, firstly we studied about synthesis reaction in which two elements combine to form a compound. And in second, an element combine with a compound and form a new compound. An element, एक element combine करेगा with a compound, एक compound के साथ. फर्स्ट टाइप में क्या था? टू एलिमेंट्स वर कंबाइनिंग एंड इन दिस एन एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद अ कंपाउंड एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ गैस व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन. दिस इज अ कंपाउंड एंड दिस वन इज एन एलिमेंट. दे बोथ react and form carbon dioxide gas which is a new compound. Same way, but this reaction is not balanced and we have to balance it. We are having 3 oxygens on left side and 2 on right side. If we combine, write it as, if we put 2 here, we'll get 2 carbon and we have to write 2 here so that on the right hand side we can get 2 carbon and total 4 oxygen on left side and 4 oxygens on right hand side. Third example is second example in this is sulfur dioxide, which is a gas or we can say is a compound, react with oxygen to form sulfur trioxide. Same, we have to balance this again. 2 sulfur on left hand side and 2 sulfur on right hand side. 4 plus 2, 6 oxygen on left hand side and 6 oxygen on right hand side. Clear? So in combination reaction we simply combine two or more elements. A element
or a compound, an element or a compound. In third example, in third type of combination reaction, what we are having? Compound. When a compound react with other compound, or we can say simply a combination of compounds. In this, two or more compounds react or combine together to form a single product बनता है इसमें, right? For example, ammonia is a compound, hydrogen chloride is also a compound. When these two gases react, we'll get a new single product, that is ammonium chloride. What is this? This is ammonium chloride. बेटा अमोनियम क्लोराइड जो होता है, दैट इज अ वाइट कलर फ्यूमिंग गैस. ये गैस क्या होती है? वाइट कलर के फ्यूम्स आते हैं. वेन एवर वी ब्रिंग HCl नियर अमोनिया गैस, तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बनते हैं. फ्यूम्स मीन्स गैस ही बनती है जो कि वाइट कलर की डेंस फ्यूमिंग गैस होती है. ये क्लियर? तो इन दिस टू or more compounds react or combine to form a single product. In your book, two experiments are given on the basis of combination reaction. First one is lead sulfide react with oxygen and form lead sulfate. बच्चे जो lead sulfide होता है, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है. जब ये रिएक्ट करता है, हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, राइट? और क्या बनेगा? व्हाइट कलर का लेड सल्फेट बनेगा, राइट? वी विल परफॉर्म इट इन आवर लैब ऑल्सो. लेड सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिव्स लेड सल्फेट, राइट, विच इज white in color. Clear? And second experiment is burning of magnesium ribbon. You have already studied it in your previous classes कि whenever we burn magnesium ribbon in the presence of oxygen, what we'll get? We get magnesium oxide and it burns with dazzling white flame. White color की flame आती है जब भी magnesium burn होता है in the presence of air. Clear? तो हमारे पास क्या बनता है? magnesium oxide. This clip shows the burning of magnesium in the presence of oxygen, producing magnesium oxide with dazzling white flame. I hope it's clear to you, and in the next video we will study about decomposition in detail. Thank you so much. Happy learning.